याद कर लो कि प्री और मेंस आपका रुके नहीं. अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर वर्ड बाय वर्ड फॉलोइंग मी, योर प्री एंड मेंस विल नॉट स्टॉप. जिसके लिए यू आर फॉलोइंग, इट वाज टेकिंग द पेन सिंस लॉन्ग ईयर्स. So I said that casteism, untouchability. Then I said that which one? पर्दा सिस्टम लेडीज का अगला सती सिस्टम, लेडीज नेक्स्ट, फीमेल इन्फेंटिसाइड नेक्स्ट, लेडी चाइल्ड मैरिज, एंड देन वी आर एबल टू सी सोशल इनइक्वालिटीज, जो कि हम लोग देखते हैं अनटचेबिलिटी. इट इज ऑल्सो अनटचेबिलिटी, सोशल इनइक्वालिटीज. एंड देन रोड पे आपको कल मैंने बताया था कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पेरियार ईवी रामास्वामी, वहां पे रोड पे भी आप खड़े होगे मंदिर के सामने, इट इज एन व्हाट, दिस काइंड ऑफ अनटचेबिलिटी इज देयर, मींस इट इज एन हाई काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी. Yes or not? The Pandits and Brahmins are like a god. They are like a what? God. So this kind of situation means a high level of, he is also human being and that person is also human being. So what is the difference? Who has created this difference? Upper class. Religion. The wrong interpretation of religion. Thereafter we have seen, these are the characteristics. समझ में आ गया? What are the major 5 characteristics? Just tell me, what are the major 5 characteristics? They have studied our हिस्ट्री नाउ, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइंस, याद हो गया, रिलीजन, लिटरेरी एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स. सेकंड, उन्होंने किस पे काम किया? रिलीजियस सोशल रिफॉर्म. किस पे किया? इन ह्यूमन प्रैक्टिस, रट जाना चाहिए, इन ह्यूमन प्रैक्टिस, सोशल एविल्स, इन ह्यूमन प्रैक्टिस, सोशल एविल्स, एंड एज फॉर सुपरस्टिशन, सोशल एविल्स एंड थर्ड वन आई टॉक्ड अबाउट, इट इज इन अमॉन्ग ऑल कम्युनिटीज. यस और नॉट? ये सभी कम्युनिटीज में. एग्जाम्पल कौन कौन से बोलेंगे? हिंदू, मुस्लिम, Parsis, Sikh and southern India. Every part of India was. Then फिर क्या बोलेंगे आप? This is in a religious based. What did I said that? Fifth आप क्या बोलोगे? Caste. It is in a working for what? Casteism. Untouchability. याद हो गया? Casteism, untouchability, sati system, parda system, and then I said that child marriage, female infanticide, social inequalities and illiteracy. खत्म. और who supported us? Directly, indirectly, in the initial level, who supported us? Achha, you tell me. Yeah, Britishers are ready to do socio-religious reform? Huh? No. Why? Huh? Yes, they were looking for their own benefit, where they are able to say that okay, it is a benefit still for them, therefore they are doing. Understood? Clear? And you can be able to see एक और अपना एक importance था क्रिश्चियन मिशनरीज, जो हम लोग देखेंगे बाद में इसके causes में. First हमने क्या देखा? These are the 5 characteristics. Can you tell me all the 5 characteristics? Fast. Feeling of pride. Okay. Second point. Yes, what is the second point? Inhuman practice. Yes, what is the third point? It has been arose in all communities. Yes or not? Among all communities of India. Fourth point. चलो कोई बात नहीं, कोई भी बात लो. Fifth point, it is religious based. Yes or not? Most of the social reform is what? Religious based. And who were initially helping? Britishers are helping directly and indirectly through their legislation. Yes or no? Or sometimes we have utilized their, I said that laws and regulation for our social religious reform. Understood it? उसके बाद आ जाता है हमारा क्या है? What is the next point? I said that caste system. एक बात मान के चलो, यूपीएससी बहुत ही खतरनाक है. They can only ask this question itself in the mains. How do the caste system
is one of the cause of socio-religious reform signify in the context of 19th century. लिख लेंगे ये क्वेश्चन. ये चीजें मुझे अब समझना है. क्वेश्चन विल बी yesterday what we have discussed, उसमें से we have to find out the answer. How do the caste system as one of the cause helped in the development of socio-religious reform movement. Yes, tell me. And this question belongs to 200 words. This question only. चलो. मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन मेंस के क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको पहले से भी आप जान रहे हैं कि ऐसे ऐसे द काइंड ऑफ क्वेश्चन आर दे आर आस्किंग वेयर यू कैन बी देयर इज एन यूज ऑफ अकबर एंड आल्सो एंशिएंट टाइम आल्सो. फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? टेल मी. फर्स्ट पॉइंट. यस. नहीं, पहले लिखेंगे अर्ली वैदिक पीरियड. कभी भी आप पॉइंट्स बना के लिखें. अर्ली वैदिक पीरियड. कीप ऑन राइटिंग आल्सो. What I said, that early Vedic period. Yes. Early Vedic period में क्या था? Yes. यदि आप थोड़ा थोड़ा जानेंगे, then you can be able to see. Listen me. One is, I said that protector and warrior. One is protector and warrior who has been known as Kshatriya in the early Vedic period. Protector or warrior who is known as Kshatriya. Another one is priest who does sacrifices for the safety of tribes. ये सारे ट्राइब्स होते थे, जितने भी हम लोग होते थे ना, उस समय क्या होता है, एक ग्रुप बनी होती थी. यस, द ट्राइबल ग्रुप. भारत जो हम लोग, भारतवर्ष जो है, भारता इज क्लान इज एन ट्राइबल ग्रुप. अंडरस्टूड? So, sacrifices for the safety of tribal group and victory of Kshatriya. Sacrifices, rituals सारे उसी में आ जाएंगे. Sacrifices, rituals. तो धीरे धीरे मंत्रास और कोई चीज, किसी जानवर को काटना, घोड़े को काटना, that they are doing. Sacrifices and rituals दोनों लिख सकते हैं आप. मंत्रास. तो रिचुअल्स क्या होता है? जो राइट्स आप करते हैं. रिचुअल्स का मतलब क्या होता है? वॉट एवर दे आर डूइंग. दूध चढ़ा रहे हो तो ये क्या हो गया? दूध देना क्या हो गया? एक सेक्रीफाइस करना हो गया. तो सेक्रीफाइसेस, रिचुअल्स, और जो आप कर रहे हो, आप अपने बॉडी से कर रहे हो, दैट बिकम्स योर रिचुअल्स. अंडरस्टूड? फॉर द सेफ्टी ऑफ ट्राइबल ग्रुप and the victory of Kshatriya in war. And who is doing this? Priest. Who is doing this? Priest. Understood?
and then protector and warrior. The Kshatriya is doing what? किसके protector and warrior था? Of their people. Means another group. It means there is only, so one, it is in a people protected by Kshatriya. So it means there is no class. It means there is what? Sorry, no caste in the society. It means there is no caste. I said that it means there is no caste in the society. Getting my point? Yes or not? Clear? In the early Vedic period, no casteism is there. Getting my point? In the early Vedic period, no caste, only class. One we will have to discuss. And then second point में देखोगे later Vedic period. Later Vedic period. In the latter Vedic period, I said that 10th mandala. Which mandala? Lekin why it become importance? You know that Ashwamedha Yajna. Do you know what is the Ashwamedha Yajna? In this early Vedic period, territory was not important. कहीं भी रह रहे हो. Second, later Vedic period, what happened? Territory become important. Yes or not? Therefore, Jan and Janpada started forming. So territory started forming means what it is? I said that which one is saying that territory becoming important? Rashtriya Yajna, Ashwamedha Yajna. Rashtriya Yajna में क्या होता था? Yes, tell me what is the meaning of Rashtriya Yajna? Anybody? Yes. फिर वाजपेयी क्या है? हाँ हाँ, वाजपेयी में हॉर्स पे होता था. वाजपेयी में विचार था. मैं वाजपेयी की बात नहीं कर रहा हूँ. राजसूय. हाँ, सम्राट. यस, बुढ़े राजा को क्या बनाया जाता था? यू आर द सम्राट. And he used to call upon all the kings from the nearby region. It means all the kings nearby, they are subjugated under particular king. What does it mean? Importance of territory. Yes or not? Which two important activities help us to know about there is a territory started becoming important? Tell me. Rashtriya Yajna, Ashwamedha Yajna make the territorial importance. Make the what? Territorial. इससे पहले यहां पर क्या होता था? ध्यान से देखेंगे. देयर इज एन, आई सेड दैट सभा, समिति, गणा. क्या क्या होता था? सभा, समिति और क्या होता था? हाँ, जनपद. इसमें से लेडीज इसमें से किसमें बैठती थी? किसमें से बैठती थी? सभा, समिति, गणा, विधाता. किसमें लेडीज बैठती थी? सभा में और विधाता में. किसमें? अंडरस्टूड? तो इसका मतलब लेडीज बैठ रही है, इसका मतलब सोशल इनइक्वालिटी है या नहीं है? टेल मी. नो सोशल इनइक्वालिटी मीन्स देयर इज एन, आई सेड दैट देयर इज नो कास्टिज्म, ओनली देयर इज एन व्हाट? क्लास. अंडरस्टूड? लेकिन लेटर वैदिक पीरियड व्हाट हैपेंड? टेल मी. लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया? Two incident, one Vajpayee Yajna and all this make the king to be, what is in a Kshatriya to be powerful, and who? Rituals become important. Vajpayee Yajna and then Rashtriya Yajna and under some Yajna make the Kshatriya and who? Priest to be important. Therefore they started interpreting earlier scripture for their own benefit against the Sudras. Yes, क्या लिखोगे लेटर वैदिक पीरियड में? राइट डाउन. These are in the early Vedic period. We have to say they are only what? No caste, no only class, no social levels. Yes or not? No social levels. But in the second later Vedic period में क्या बोलोगे? Yes, tell me first.
Write down. In the later Vedic period, राजसूय यज्ञ, विश्व यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ created importance of territory and nation. Nation means राष्ट्रवर्ड, राष्ट्रवर्ड सेकंड में आया था. Importance of territory and nation. Increase the importance of territory and nation. And during these rituals, importance of priest also increased, but importance of woman decreased. These two upper class for their benefit, these two upper class for their benefit interpreted scriptures incorrectly in front of Shudras and to some extent Vaishya. Understood? This way, in the later Vedic period,